Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hello friends, here I am with another new concept of philosophical foundation of education. So before going to the concept, when we analyze the philosophical prospect in educational context, we found there are two types of educational process or philosophical process which are greatly influenced to our educational system. And these are categorized into two categories, that is Indian schools of philosophy and Western schools of philosophy. And in Indian schools of philosophy, we found there are two also subcategories, that is heterodox type of schools of philosophy, जो थे कि हमरो जो बुद्धिज्म जैनिज्म ए भलिया कांसेप्ट रे कथा आसे जोटा ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ फिलोसफी जोटा आमे आस्तिक फिलोसफी बोली कहू तो सेही फिलोसफी रे आमे देखिबा जो न्याय सांख्य योगा वेदांत तो ए भलिया फिलोसफी आसे हमरो हेटेरोडॉक्स टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ फिलोसफी अंडर रे बट वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को जेतेबेले आसीबा इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आल्सो found there are different type of philosophical prospect and thoughts are there, and starting with idealism, then naturalism, pragmatism, realism, existentialism, Marxism. So such type of philosophical prospects are greatly influenced to our educational process and structure. So in this class we discuss the concept of idealism and how idealism related to the educational process. So here we discuss the concept of idealism and the basic principles of idealistic philosophy, and then the educational implication of this type of philosophy. So let's start of idealism and education. So first idealism. तो जेतेबेले आइडियलिज्म रो कांसेप्ट आसे आउ ताकू जेतेबेले हमें वर्डली मीनिंग बाय एटिमोलॉजिकली ताकू जेतेबेले एनालाइज करू इन दैट टाइम वी फाउंड द वर्ड आइडियलिज्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड आइडिया और आमे ताकू अदरली भी कहि परिबा जो आइडियल्स बोली भी बेले बेले आइडिया बा आइडियल्स वर्ड रु बा ई सेंस रु आमे आइडियलिज्म वर्ड बा जो फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्ट आछि बोली आमे देखू. And if we analyze these two words, idea or ideals, both are the functions of mind. आमे जतबेले गुटे आइडिया कथा कहू सेतबेले हम माइंड रु आइडिया आसे बा जतबेले आमे जनकर आइडियल को फॉलो करू से इंडिविजुअल रो थॉट प्रोसेस बा तार जो फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्ट ताकू आमे फॉलो करू तो सेही भलिया इंडिविजुअल को आमे आइडियलिस्ट बा आमे तारो आमे तांको हमरो आइडियल हिसाब रे कंसीडर करू. तो ए जो प्रोसेस ता both the process is come under the process of our mind. तो आइडियलिस्टिक फिलोसफी रे ए माइंड रो कांसेप्ट को बहुत इंपोर्टेंस दिया हेछि. कोन कोन दिया जाइछि आमे धीरे धीरे डिस्कशन को जिबा. The word idealism has been derived from the word ideals. Sometime idea ru भी किछि जगह रे भी लिखा ही था. Plato conceived of ideas as the basic of the philosophy. तो जे कोनोसी फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्ट को आमे जो देखिबा the most important concept that is called idea. Sabu philosophy गुटे particular idea रु आसी थाए. And idealism is a philosophical position which adheres to the view that nothing exists except an idea. So that idealism philosophy that provide focus on the idea. Okay. So that philosophy advocates there was nothing except an idea in the mind of mind. आमे man. तो आमे जहा देखुचंदी हम सराउंडिंग रे सबु कथा ए आइडिया रु ही आसीची आ जोटा कि ह्यूमन माइंड रे ही क्रिएशन हेछि. आइडिया और हायर नेचर ऑफ एसेंस दे आर अल्टीमेट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस. तो इन दिस कॉस्मिक वर्ल्ड द थिंग्स व्हिच आर परसीव, व्हिच वी आइडेंटिफाई, व्हिच वी डिटरमाइन, व्हिच वी प्रोवाइड डिफरेंट नेम्स, all are the concept of our mind. Due to that the function of mind is very important according to idealism. Then idealism idolizes mind and self. Okay, idealism को concept ऊपर focused रहिला ना mind and self. These two things are very important for the human being and his or her thought process. An idealist shift
the emphasis from the natural and scientific fact of life to the spiritual aspect of human experience. तो जो नेचुरल बा साइंटिफिक प्रोसेस बा फैक्ट जोटा को हम रियलिटी बोली देखू बट आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रे दीज आर द प्रोसेसेस एंड जो प्रोसेसेस हमको को आड़ को नहीं जाए ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस आड़ को नहीं जाए. सो the most important part of human life, that is the spiritual prospect which are present in our बा हमें कहि परिबा जो इनर क्वालिटी रे हमर जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हम भितरे अछि सी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट रे ही आइडियलिज्म अछि बोली हमें डिस्कशन करू. ओके, देन फिलोसॉफिकल मीनिंग आइडियलिज्म रो कोन देखिबा. आइडियलिज्म सीक्स टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैन and the universe in term of spirit or mind. जो human being होंतु बा हमर universe होउची ए both are determined or both are recognized by the spirit or mind, through spirit or mind. ए कथा को हमें बुझीबा टिके भलो से. तो आम समस्त को पाखरे गोटे सोल अछि, आत्मा अछि. जो आत्मा ता गोटे इंडिविजुअल सोल हिसाब रे कंसीडर हुए. But in every religional concept you found there was a concept of super soul. परमात्मा कर concept सबु religional prospect रे तमे देखिया पई पाइबो. That is called the spiritual, the super soul or the super mind जे कि एई सब जिंस को तयारी करछि. Okay, so idealism concept रे एई कथा को determine करा जाय. Idealism is in fact spiritualism. Man's spiritual nature is considered to be very essence of his being. That means we individuals are categorized or differentiated from other animals due to our spiritualism. आम छड़ा आउ कोनोसी एनिमल को पाखरे स्पिरिचुअलिज्म रो कांसेप्ट न थाए बा आमे कहि परिबा जे वी रिकॉग्नाइज डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस और जो आमे सुपर सोल बा जहा को भी आमे जहा भाबुचंती हमरो देवता हिसाब रे बा हमरो जो ईश्वर हिसाब रे ऑल आर आमे जो सेमान को जो सेप प्रोवाइड करछंती आमे जो तांको आमे को हिसाब रे देखंती ना आम रूप रे देखंती. से आमे यीशु कृष्ण कथा कोंतु बा आमे श्री कृष्ण को कथा कोंतु बा आमे जो मोहम्मद को कथा कोंतु समस्त गुटे गुटे ह्यूमन बीइंग रो जो सेप रे आमे तांको डिफाइन करंती. ओके, सो दैट मीन्स ऑल द इंडिविजुअल्स हैव सच टाइप ऑफ क्वालिटी जोटा को आमे कोन को ना डिवाइनिटी. ओके, so every animals including human beings also have another quality that is called animality. Okay, so those animals have such quality, animality characters or animality quality. They are only strive for food, shelter and sex. But we individuals, we human being not only strive for these three things of our life. आम भितरे गोटे कौन गोटे कथा अच्छी जी की किछि स्पेशल आम पई तयारी करे बा आमे किछि स्पेशलाइजेशन हमकु दिए से जो कैरेक्टर टाकू आमे हमर डिवाइनिटी कैरेक्टर बोली कहू जोटा कि भगवान को पाखरे आमे डिफाइन करिसंती डिफरेंट स्क्रिप्चर रे से क्वालिटी गुडा ऑलरेडी आम पाखरे ही अछि जो गुडा आमे स्क्रिप्चर रे देखुचंती दीज आर द मैन मेड स्क्रिप्चर्स ताकू भगवान लिखिना ताकू गुडे ह्यूमन बीइंग लिखिचंती. तो ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन बीइंग मान को पाखरे गुड क्वालिटी अछि से क्वालिटी गुडा को गुडे स्क्रिप्चर रे रिप्रेजेंट करछि. हमें बाइबल कथा कहतु, गीता भागवत कथा कहतु बा कुरान कथा कहतु, ए सबु जगह रे जो ह्यूमन बीइंग मान को पाखरे जो गुड क्वालिटी अछि जो स्पिरिचुअल क्वालिटी अछि से क्वालिटी गुडा को आमे कोन करचंती ना गुटे स्क्रिप्चर रे रिटन फॉर्म रे ताकू रखिचंती. तो सेही क्वालिटी गुडा ऑलरेडी गुटे ह्यूमन बीइंग मान को पाखरे अछि. तो थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस वी ओनली डिराइव दीज क्वालिटीज टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड मैनकाइंड. सेही जिंसटा को आमे philosophical meaning रे idealism कहूची. It asserts that reality is to be found in man's mind rather than the material nature. तो जो reality रो कथा हमें जो real world कथा को perceive करूचंती that is the perceive of our mind. Okay, not the natural world. हमें जो जिंस जो material things को जो हिसाब रे identify करूचंती जो हिसाब रे ता nature को define करूचंती सेटा को define किए करिछि ना हम human mind define करिछि बोली idealism philosophical prospect concept a concept diye. Okay, these are the concept or philosophical meaning of idealism philosophy. And then come to the next part, that is the principles or chief assertions of idealism.
तो बेसिक प्रिंसिपल रे कौन कौन कथा रहिबो तो एठी मुटे इंपोर्टेंट कथा कहिया पई चाहिबी तो आमे एबेठु जो जो फिलोसॉफिकल कांसेप्ट को पढिबा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे वेरी इंपोर्टेंट तो एग्जाम प्रोसेस रे आमे ताको लेखिबा केमिति जेमिति कि मु स्टार्ट कली गुटे जो बेसिक इंट्रोडक्शन रे आइडियलिज्म रो ताकू सेमिति स्टार्ट करा जिवो आ मोस्ट सबु फिलोसॉफिकल पर्सपेक्ट रे तार प्रिंसिपल्स को लेखिबा पई चेष्टा करिवो काहे कि ना तार फिलोसॉफी को न बुझिले ताकू एजुकेशनल इंप्लिकेशन को आनिबाटा डिफिकल्ट हुए तो फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द चीफ एसर्टन द प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर फिलोसॉफी तापरे आमे एजुकेशनल इंप्लिकेशन को जिबा तो वर्तमान आमे डिस्कशन करिवा द चीफ एसर्टन्स ऑफ आइडियलिज्म द फर्स्ट वन इज स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूएट रियलिटी आम पाखे जो स्पिरिट बा आम पाखे जो सोल अच्छी आम पाखे जो माइंड अच्छी these two things constitute the reality the things which we perceive which we ascertain which we analyze all are the processes of our spirit and our mind idealism believe that the spiritual nature of man is essence of his being तो हमको जो ह्यूमन बीइंग हिसाब रे कंसीडर करा होची that is due to our spiritual nature the mental and spiritual is more real and important than the material तो ए जगह रे स्पिरिचुअल बा मेंटल प्रोसेस जो माइंड रो प्रोसेस टाकू मोर रियल कुआ होची ड्यू टू दैट इज द प्राइमरी एट्रिब्यूट एंड द सेकेंडरी एट्रिब्यूट दैट इज द मटेरियल एई गुडा सब एई जो मेंटल बा स्पिरिचुअल प्रोसेस रु ही डिराइव हेची सेति पई आकु हमें सेकेंडरी बोली हमें ताकू डिफाइन करिलु then the second principle that is man being spiritual as a supreme creation human being are considered as the supreme creation of this universe because we have such type of divinity characters or qualities and according to idealism the supreme aim of life is exhalations of human personality जो quality टा जो divinity character बा quality हम भितरे अछि सेही प्रकार personality को हमें बाहर को नहीं केसिबे exhalations of human personality and man is a spiritual being and it distinguishes him from other animals जेहेतु आम पाखे सेही भलिया spiritual characters रहुची due to that we are differentiate ba we are different than the other animals reality is found in the mind of the man and the external world तो human being रो mind रे au external world रे हमें reality को पाई परिबा then universal mind जोटा कि मु जस्ट आगु डिस्कशन करथुली द यूनिवर्सल माइंड जो कांसेप्ट कहउचंती जो परमात्मा का कांसेप्ट में कहउचंती जे कि ए सब क्रिएशन रो मूल ओके द रूट ऑफ द ऑल क्रिएशंस से कांसेप्ट को हमें यूनिवर्सल माइंड हिसाब रे कंसीडर करू आइडियलिज्म बिलीव इन यूनिवर्सल माइंड द लिटिल माइंड इज द पार्ट ऑफ इट ह्यूमन बीइंग्स हैव all the human beings have their own mind these are considered as little mind these are human mind okay is a part of it the goal of human life is to realize the universal mind so every human being have their goal of the ultimate goal ame tak koi pariba ultimate goal of every human being's life that is to unifiedness with the universal mind paramatma ko soito amo atma ko लीन कर दबा विलीन होई जिबा that is the most important aim of human being boli idealistic philosophy concept diye then faith in spiritual values the most important value is spiritual values according to the idealism values are absolute and unchanging that is not changeable in nature according to idealism values are absolute and static ame kahi pariba and unchanging the prime aim of human being to achieve spiritual value these are truth beauty and goodness जोटा ame डिस्कशन करूथुलु जते बेले एंजियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल पर्सपेक्ट रे हमें डिस्कशन करूथुलु जे सत्यम शिवम सुंदरम ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस दीज आर द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ एंड एवरी इंडिविजुअल्स मस्ट ट्राई टू अटेन दीज थ्री वैल्यूज इन द परस्यूट ऑफ दीज वैल्यूज मैन रेज हायर एंड हायर इन द मोरल प्लान्स टिल ही अटेन डिवाइनिटी जदि गोटे इंडिविजुअल एई वैल्यू को ता लाइफ रे सिए realize करूची then automatically that individual can goes further and कोठी की से जाई कि मिसी जीवो ना डिवाइनिटी पा कैरेक्टर पाकरे डिवाइनिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट हबो आ से गुटे डिवाइन इंडिविजुअल हे जिवो बोली एठी डिफाइन करा होची जो ता प्रिंसिपल रे
then real knowledge is the perceived in mind. जो knowledge हम real कथा कहउछंती, real knowledge रो concept जते बेले आसुची, these knowledges are perceived in our mind. Okay, so God is the source of all knowledge. Knowledge acquired through the activity, creativity and exercise of mind. तो आमे जो knowledge gain करूछंती सबु knowledge रो root बा सबु knowledge रो जो आमे कोठु आसीची बोली आमे कहउछंती ना भगवान को पाखरु आसीची, ईश्वर को पाखरु आसीची बोली आमे एटी कहंती. एंड को कहा थ्रो रे ए जो नॉलेज माने जो कोन डेवलपमेंट हबो ना एक्टिविटी थ्रू एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड एक्सरसाइज ऑफ माइंड इज इंपोर्टेंट देन द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द सेंसेस. ओके, तो सेंस थ्रो रे बा सेंस ऑर्गन थ्रो रे हमें जो नॉलेज परसीव करचंती, दीज आर नॉट एक्चुअल नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. एक्चुअल नॉलेज वी गेट थ्रू द एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड एक्सरसाइज ऑफ आवर माइंड. दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे एई पांचटा जो प्रिंसिपल को लिखिले भी सफिशिएंट हे हबो. Then come to the next part of that philosophy, that is educational implication. And आमे जेमिति डिस्कशन करिथिलु आगुरु जे philosophy जो concept को आमे देखुचंती, that is the base, and on that base we construct the educational process and system. Okay, without philosophy we cannot functionate or we cannot create any type of system of education. So first thing is philosophy determines the aims of education. जो philosophy base रे आमे आमो education system टा को नबा, सेही philosophy base रे बा सेही philosophical prospect रे education टा कोन केमिति कहूची सेही जिंसटा को भी आमे एठी देखिबा. So self realization or exhalations of personality, that is the first and the most important aim according to idealism. Man is the most beautiful creature and God's greatest work. The first aim, that is self realization and exhalations of human personality. तो सही context रे idealistic point of view रे कौन discussion करा होची जे man is the most beautiful creature of the God, his greatest work. भगवान कर जदी greatest work आमे जदी कोटा बोली पचारंती बा आमे जदी एनालिसिस करंती, these are human beings. And it lays stress on the exhalations of human personality. It is the self realization. Okay, through education we try to develop our self realization. Who am I? When we ask that question, who am I, then and if we find out the answer of that particular question, then automatically you get the realization of self. The aim of education is to develop the self of the individuals higher till self realization is achieved. And that type of self realization we can only achieve through the proper education. So the first aim of education according to idealism, that is to achieve the self realization process or exhalations of human personality, जोटा को हमें divinity character आम भितर अछि बोली हमें कहउछन ताकू बाहर को नै कि आसीबा through education. That is the first and the most important aim of education. Then the second aim is universal education. तो education टा को हमें universal in nature करिबा. Every individual must get education because education can open the mind of individuals. Due to that, every individuals must take proper education. So सही context रे universal education नो concept को से define करले. Education should be universal in nature. Education should be based on the teaching of universal truth from the standpoint of rationality of the universe. Okay, without any biasness, आमे कोनोसी यूनिवर्स रो कोन कांसेप्ट को विदाउट एनी बायसनेस आमे कोन करिबा ना नॉलेज को गेन करिबा इन ए यूनिवर्सल मैनर. ओके, एंड आल्सो वी फोकस ऑन द ऑल यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, जोटा कि हमकु रियल नॉलेज प्रोवाइड करियो बोली कहूची. एंड दीस थिंग्स आर रियलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन. That is the second aim of education according to idealism. Then come to the third aim, that is spiritual development. Idealists give greater importance to spiritual values in comparison with the material attainment. जो कथाटा मु already discussion करिथिली जे spiritual value is the primary concept and material attainment is the secondary concept. The first thing is to attain the spiritual values, because spiritual values, if an individual can attain, then that is very easier for that individual to gain or to unified with the super soul. According to Rusk, education must enable mankind through its culture to enter more and more fully into the spiritual realm.
and also enlarge the boundaries of the spiritual realm. Through education, आमे आम कल्चर भितर को धीरे धीरे पशिबा आ जते अधिका पशिबा आम भितर सेते नॉलेज रो डेवलपमेंट होबो सेते कांसेप्ट रो डेवलपमेंट होबो सेते आम पाखरे विभिन्न कथार डेवलपमेंट आसीबो. ओके, then next aim of education according to idealism is transmission and promotion of cultural heritage. तो जो कल्चरल हेरिटेज बेस रे आमे आम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करंती से स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करथिबा कल्चरल हेरिटेज को आमे कोन करिबा ना ट्रांसमिट करिबा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन and also promote these things for the development. Education must contribute to the development of culture, enlarging the boundaries of spiritual realm. The child has to be introduced to his cultural heritage so as to enable him to conserve, promote and transmit. Conserve करके रखिबो through educational process and promote करिबो by the help of educational process, and also by the help of educational process it transmit from one generation to another generation जोटा कि से कहूची to the rising generation, new upcoming generation को से transmit करके दबो. That is the fourth aim of education according to idealism. The next one is the cultural and the moral values. Okay, moral values are important according to idealism. Due to that, through education we always try to develop the moral values or the spiritual जो हमें कहि परिबा spiritual values within the individuals. So according to idealism, man is a moral being. The process of education must lead to the deepest spiritual insight. Through education आमे कहा भितर को जिबा ना deepest spiritual insight भितर को जिबा and to highest moral and spiritual conduct. And also through education we maintain highest moral and spiritual conduct, because these things are very useful for a human being if that individual wants to salvation or moksha. जदि जने मोक्ष प्राप्ति करिया कथा चिंता करूची ताले एई सब जिंस को गुटे इंडिविजुअल मेंटेन करिबा निहाती दरकार. Then the next aim of education, that is development of intelligence and rationality. Development of intelligence and rationality. Every individual have their own intelligence capacity, and through education, idealistic philosophy advocate, we always try to develop the intelligence capacity of individuals. There is a set of principles working in this creation. An idealist always tries to discover, understand these principles so that on the basis of moral elements, the world remains organized. Hence, education is to develop intelligence and rationality of the child. तो गोटे इंडिविजुअल को पाखरे जदि इंटेलिजेंस रो कैपेसिटी को हमें डेवलप करिया पई चाहूचती, rationality रो कैपेसिटी डेवलपमेंट करिया पई चाहूचती, then we must need a proper and systematic education. These are the basic aims of education according to idealism. Then the next part, आमे कोन कलु ना एम तैयारी कलु, गोल प्रिपेयर कलु. तो then next part is the means, determination of the means to achieve these goals, and that is our curriculum. तो idealistic point of view रे कोन curriculum को importance दिया जाइछि, कोन curriculum को आमे आम educational process रे adopt कले आम पई easier हबो आमको आम गोल रे पहुंचीबा पई, तो सेही curriculum गुडा को वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा. While developing curriculum, idealistic give more importance to thought, feelings, ideals and values. तो जतबेले करिकुलम प्रिपरेशन होउची सेत आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रे को पॉइंट बा को पार्ट को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाए ना इंडिविजुअल्स थॉट, तांकर फीलिंग्स को, तांकर आइडियल्स को एंड तांकर वैल्यूज को, देन द चाइल्ड एंड हिज एक्टिविटीज. चाइल्ड ऑफ एक्टिविटीज को टिके परे आमे डिफाइन करू बा ताको बेसी एम्फासाइज करू, बट फास्टली आमे आम थॉट, फीलिंग्स, आइडियल्स और वैल्यूज को जो फोकस करू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ curriculum according to idealism. They holds that curriculum should be concerned with the whole humanity and experience. जो curriculum prospect रे आमे जो कथाटा को रखिबा, all the things which are placed in our curriculum system, these things must concerned with the whole humanity and experience. Whole humanity और experience को जेमिति से focus करूथु. Then human activities may be classified as intellectual, aesthetic, moral and physical. तो एई प्रकार जो हमर ह्यूमन एक्टिविटी रहउची
एई प्रकार एक्टिविटी रो डेवलपमेंट करे कि आम भितरे गुटे प्रॉपर ह्यूमन बीइंग रो डेवलपमेंट करेबो दैट इज द मेन एम ऑफ आइडियलिज्म ड्यू टू दैट philosophy provide such type of curriculum which are emphasize the development of intellectual, then aesthetic development, morality development and physical development. Then great importance is given to humanity, culture, art, history, philosophy, literature, religion. ये सब concept को आम idealistic philosophy माने तांको curriculum रे रखंती. Okay. And idealism does not ignore physical activities because idealistic philosopher believe a good mind, a good body can possess a good mind. तो गोटे माइंड को जदि कथा एठी डिस्कशन करा होची माइंड इज इंपोर्टेंट एवरीवेयर माइंड स्पिरिट एई कथा जदि कुआ होची तो ए गुड माइंड गोटे रखिया पई आम गोटे गुड बॉडी रा जो नीड अछि ड्यू टू दैट फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो इंपोर्टेंट फॉर विथ हेल्थ एंड फिटनेस परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज इज सीरियसली हैम्पर्ड. And if we do not maintain a good physique, then कौन होबो ना आम पाखरे ई जो माने जो कौन कहि परिबा हमें जो बेड फिजिक हमको प्रॉपर स्पिरिचुअलिज्म रो कांसेप्ट हम भितर डेवलपमेंट करिया पय दबो नाही बा गुटे साउंड माइंड रो क्रिएशन हम बॉडी रे हेई परिबो नाही. सो स्पिरिचुअल एजुकेशन सॉरी फिजिकल एजुकेशन इज सिमिलरली इक्वल देन अदर एजुकेशन. Then the next part is method of teaching. हमें वर्तमान जो मीन्स खोजी देले तो मीन्स को यूटिलाइज हमें केमिति करिब हाउ टू यूटिलाइज द मीन्स ओके टू अचीव द गोल एंड दैट यूटिलाइजेशन ऑफ मीन्स इज कंसीडर्ड एज मेथड ऑफ टीचिंग. सो आइडियलिज्म हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म क्लासरूम इज अ टेंपल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग. जो क्लासरूम कथा कुआ होची दैट इज अ टेंपल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग. A meeting place of human minds is a place of self education. For this no particular method has been suggested. तो गोटे पर्टिकुलर सेमिति गोटे स्पेसिफाइड मेथड को हमें आइडियलिज्म जो प्रेस्क्राइब करी नाही. तो जो एजुकेशनल सिस्टम जो उठी मेंटेन होउची कंडक्ट होउची सेटा गोटे स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फियर रे स्पिरिचुअली हमें जदि टेंपल रो कथा कुआ होउची सेही भलिया प्रोसेस को एठी से डिफाइन करिची मेथड ऑफ टीचिंग रे. तापरे भी किछि स्पेसिफिक मेथड आइडियलिज्म रे हमें देखंती आइडियलिज्म फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव रे हमें किछि मेथड यूज होबार भी देखिचंती. हाउएवर द फॉलोइंग मेथड्स हैज बीन एडवोकेट्स बाय डिफरेंट आइडियलिस्ट. देन लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय लेक्चरिंग, लर्निंग बाय डिस्कशन, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग. देन डिस्क्रेट employs the device of simple to complex. Okay. Then Herbert Spencer advocates the instructions method while the Froebel insisted upon the playway method, Socrates methods and discussion methods from the basis of idealism. तो एई भलिया किछि मेथड को मध्य आइडियलिज्म रे हमें पाइबा जेमिति कि रीडिंग मेथड, लर्निंग थ्रू रीडिंग, लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग. जने लेक्चर जो रहिबो गुटे मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल रहिबो जे कि शेयर करिवो नॉलेज, ट्रांसमिट करिवो नॉलेज थ्रू लेक्चरिंग प्रोसेस. And also sometimes we also found the discussion methods are adopted in the process of teaching in idealistic prospect. Then learning by imitation, आमे imitate करिबा जेमिति हमरो जो टीचर्स रहिले स्टूडेंट्स also imitate their teachers in the learning process. केमिति टीचर लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करूचंती, केमिति एनालिसिस करूचंती, ए सब कथा को मध्य जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच रे यूटिलाइज करा जाई पारे आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रे. Then learning through questioning, also question answer method is also utilized or used in idealistic teaching process. तो आउ किछि मेथड एठी तळे डिस्कशन करा हिची. तो these are the basic teaching methods which are used in process of teaching in idealistic concept of education. Then the next part is idealism and teacher. तो idealism गोटे टीचर को केमिति डिफाइन करे. आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी रे टीचर रोल कौन, टीचर रो इंपोर्टेंस कौन, टीचर टा केमिति होबा दरकार, तारो जो तारो बिहेवियर केमिति होबो, ए सब डिफाइन आइडियलिज्म केमिति करिछि वर्तमान देखिबा. एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट पैटर्न इज आइडियल सेंटर्ड. ओके. तो हम ऑलरेडी ए कथा डिस्कशन करि सारछथि. नॉट होली चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, केवल आइडियल सेंटर्ड. तो आइडियल कहारो? टीचर रो आइडियल. तो आइडियलिस्टिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन ग्रांट्स द हाईएस्ट प्लेस ऑन द एजुकेटर. तो एजुकेटर मान को हाईएस्ट प्लेस देइछि
जे दीज आर द कंसीडरेड एज सेकंड गॉड ओके जी की तुमको माने गोटे स्टूडेंट को जते बेले परमात्मा सहित जी मिसई दी पारुची तो जदि आमे ताको देखिबा जे इनडायरेक्टली दैट इंडिविजुअल इज आल्सो द सेकंड गॉड बोलिए भी आमे ताको कंसीडर करि परिबा द टीचर क्रिएट्स ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर द एजुकेंट्स डेवलपमेंट सो द मोस्ट इंपोर्टेंट जदि कहि परिबा फंक्शन ऑफ ए टीचर और रोल ऑफ ए टीचर टू क्रिएट ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर द एजुकेंट्स स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ओके आम जो स्टूडेंट मानकर डेवलपमेंट पाई गोटे पिलाटे बा गोटे टीचरटे गोटे स्पिरिचुअल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो जोठी की पिला भितरे स्पिरिचुअलिज्म रो कांसेप्ट रो डेवलपमेंट आसीबो सो दैट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ ए टीचर आउ निज निज बही रे भी तुमे अलग अलग कांसेप्ट टीचर बाबद रे पाई परिवो सेटु भी नोट प्रिपेयर करि परिवो तो आउ गोटे कथा टीचर बाबद से डिफाइन कले जे एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट पैटर्न इज आइडियलिस्टिक सॉरी ए कांसेप्ट आमे ऑलरेडी देखि सारछन ठीक अछि देन रोल ऑफ ए टीचर कोन कोन होबा दरकार द टीचर पर्सनलिफाई रियलिटी ऑफ द फॉर द pupil understand and learns about the universe through his teacher okay so through teacher students to try to understand students to learn about the universe okay कहा थ्रो रे ही परिबो ना टीचर थ्रो रे ही परिबो बिकॉज़ टीचर्स आर द मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स देन द स्टूडेंट्स द टीचर हैज टू बी स्पेशलिस्ट इन नॉलेज ऑफ ईच वन ऑफ हिज प्यूपिल ओके तो टीचर कोन हेथिबो ना स्पेशलिस्ट हेथिबो नॉलेज रो पिला जमिति भाबिबो पिला जमिति रियलाइज करिवो जे ना टीचर सब कथा जानि चंदी तो सेही भलिया सब कथा जानिथिबा भलिया गुटे टीचर हेथिबा दरकार बा टीचर रो रोल एया जे से सब कथा को जानिबो ओके देन ए गुड टीचर कमांड्स द रेस्पेक्ट ऑफ द प्यूपिल बाय virtue of his own high standards of behavior and conduct ओके तो गोटे टीचर मेंटेन करिवो तार कंडक्ट तार बिहेवियर ए जो मेंटेन करिवो गोटे हायर लेवल ले मेंटेन करिवो जो लेवल टा से मेंटेन कला परे ऑल द स्टूडेंट मस्ट फाइंड देयर ओन आइडियल्स ओके स्टूडेंट्स आइडियल्स आर देयर टीचर्स सेही भलिया आइडियलिस्टिक बिहेवियर को शो करेबो के ना टीचर द टीचर शुड बी पर्सनल फ्रेंड ऑफ द इंडिविजुअल्स तो आमे जदि एई कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा जनरली जो टीचर रो स्कूल सेटअप बा स्कूल सिचुएशन जोटा रहुतला गोटे गुरुकुल सिस्टम रे रहुतला बा गोटे आमे जदि कहि परिबा जे टीचर तांको घरे गोटे सेटअप तयारी करथले एजुकेशनल सिस्टम रे ओके तो से जगह रे जो स्टूडेंट माने पढुतले जो डिसिपल माने थिले सेठी की सेही गुरुकुल आश्रम को आस्तुले बा तांकर जोठी टीचरंकर जो रेसिडेंस थिला सेठी की आसी की से माने पाठ पढुतले तो जतबेले समय सेठी की आसी की पाठ पढुतले तो से जगह रे जो टीचर थिले दे आर ऑल एवरी माने हमें कहि परिबा सब किछि कहार स्टूडेंट रो तो गोटे स्टूडेंट जतबेले सब किछि गोटे टीचर हेइ जिवो सेतबेले टीचर रो रोल टिके बढ़ी जाए तो से जगह रे टीचर फ्रेंड हबो गाइड हबो फिलोसोफर हबो एबेला विभिन्न प्रकार रोल टीचर सेठी शो कराए इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ इमिटेशन ओके तो टीचर सेही भलिया रोल प्ले करिवो जो प्लेटा स्टूडेंट को इमिटेट करिया पई बाध्य करिवो ओके से भलिया गुड एटीट्यूड रो से भलिया गुड बिहेवियर रोल गुड टीचर प्ले करिवा दरकार देले जे कि कोन होबा ना स्टूडेंट शुड बी फॉलो द टीचर्स ओके तो such type of behavior must be adopted by the teachers and these are the basic role of a teacher according to idealistic philosophy. Then the next part that is idealism and discipline. तो गोटे आइडियलिज्म रो डिसिप्लिन केमिति आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव रे स्टूडेंट भितरे डिसिप्लिन केमिति आमे आनिबा बिकॉज़ इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एवरी एजुकेशनल प्रोसेस मस्ट नीड सम डिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स and also tries to develop the disciplinary attitude among the individuals. So according to idealists attach importance of impressionistic discipline in comparison with the repressionistic discipline. तो एठी repressionistic discipline को देखा जाए नहीं impressionistic discipline. These are disciplines are जो आमे कहि परिबा ताको आमे फील करि परिबा आमे ताको देखि परिबा से डिसिप्लिन सेही भलिया डिसिप्लिनरी कांसेप्ट कथा आइडियलिस्टिक philosophy advocate करे. They assert that the teacher should the first gain respect from the child by his affectionate and sympathetic behavior. तो एठी टीचर रेस्पेक्ट को गेन करिवो केमिति गेन करिवो
Now, by the help of affectionate and sympathetic behavior, and then motivate him to learn by his prize-worthy ideals. Okay, he has to sublimate his basic instinct. Okay, तार basic instinct को utilize करिवो, praise-worthy ideals को से show करेबो, गुटे good behavior pattern ता भितरे आनिबो, affectionate behavior बा sympathetic behavior show करिवो towards the student, then automatically we found students are become, but students should develop disciplinary attitude towards the teachers. He has to maintain such an environment so as to control his undesirable activities and develop desirable qualities. तो जेतेबेले गुरुकुल आश्रम को स्टूडेंट आसुतले पढ़िया पई बा टीचर्स रेसिडेंस को जेतेबेले स्टूडेंट आसुतले पढ़िया पई तो टीचर से जगह रे एभलिया गुटे एनवायरनमेंट क्रिएट करिवे, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करिवे जो जगह रे कि स्टूडेंट डू नॉट डेवलप एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल एटीट्यूड और एक्टिविटीज आउ ऑटोमेटिकली से कथाटा जतले सप्रेस होबा स्टार्ट होबो देन द डिजायरेबल क्वालिटीज द नेसेसरी बा नेसेसिटीज जो कथाटा हम लाइफ रे दरकार से सब क्वालिटीज रो डेवलपमेंट हुए of head and heart in such a way that he begins to exercise and maintain self discipline. Exercise and maintain self discipline ta bhitore nije nije development hei jibo. The student should realize that this self discipline is for his own good and development. Our student be realize karibo the self development ba self disciplinary concept is very good thing for them. Okay. तांको निजर डेवलपमेंट पाई ए भलिया सेल्फ डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट रो माने जो दरकार अछि बोली स्टूडेंट रियलाइज करिवो. ओके, तो ए जगह रे भी आमे आ गुटे देखि परिबा जे आइडियलिज्म आल्सो बिलीव ऑन मिलिटरी डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट जोटा कि आमे गुटे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रो प्रोविजन आइडियलिज्म रखुतला इफ स्टूडेंट कमिट एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स जो थिरे कि पिला मानन को भितरे कोन रहउतला ना तांको फियरनेस रहउतला एंड दे डू नॉट ट्राई टू कमिट एनी टाइप ऑफ indisciplinary attitude in their educational process. Then the last thing, idealism has made a significant contribution to education thought because that is the very oldest philosophical prospect बोली आमे तो consider करंती जे कि educational process को गुटे new direction provide करथिला. It has given higher place of mental and spiritual than the physical world. It stress religious education for character training जो religious education को बेसी impact करा जाए through idealistic philosophy. Idealistic philosophy provides clear and direct guideline for the aims of education, curricula, teacher's role and method of teaching. So these are all about your idealism and education.